Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Dear Sister by Happy Chirp. Today I have with me a friend of mine sitting here, Maida. Kaisi ho? Bilkul theek. How are you? I'm good. And we have Usra. Everybody knows Usra. Maida jo hai, she was here from Lahore. She was visiting. So I thought, why not have her on the podcast? Because thoda sa, diverse ho jata hai, naya banda, fresh perspective, more different things to talk about. So the good news for today is that कि मायदा की शादी होने वाली है. Yay! Congratulations! Thank you. तो आजकल मायदा जो है वो अपने घर शादी की तैयारियों में बहुत मसरूफ़ है. And काफ़ी स्ट्रेस भी है इस बात का. स्ट्रेस भी है. शादी से नहीं भी हो रही तो भी स्ट्रेस है, हो रही तो भी स्ट्रेस है. So that's true. Yeah, that's true. तो talking about Maida's शादी, I thought कि क्योंकि मायदा की शादी हुई है तो हम इसी टॉपिक के अराउंड there's a lot to talk about. I've been married for 8 years, so that's a very long time ago. But because you are about to get married, and you will eventually get married in the future. You too plan to get married, right? Yeah. Okay. मैं अपने से मान रही हूँ कि मैंने शादी नहीं करनी. Excuse me. Yeah. So of course शादी से पहले एक तो जब आपकी शादी का कुछ पता भी नहीं होता कि होनी है नहीं होनी, but obviously आपकी एक लाइफ होती है that you want to define it a certain way. But I think when you don't know कि अच्छा आपका फ्यूचर कहाँ है, किससे आपकी शादी होगी, क्या होगा, तो दैट brings a lot of uncertainty in your life, because you can't make a lot of decisions. I know कि मायदा तुम्हारा ये होता था कि मुझे पता ही नहीं क्या करना है. हाँ, so can you share a bit about that कि वो thought process कैसा था when you didn't know? I think it was the most difficult time of my life because I think for girls इतना मुश्किल है आगे फ्यूचर में कुछ भी प्लान करना because it depends on where you will get married. Like I graduated and I gave my exams. मैं US जाने की तैयारी करी थी और सब कुछ, and खैर बीच में कोविड आ गया, लेकिन वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए भी घर में प्रेशर होता था कि नहीं साथ साथ रिश्ते देखने हैं. अब वो जब रिश्ते आ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई यूके का है, कोई पाकिस्तान का है, आई वुड बी लाइक वेयर इज़ माई career fitting into this? Like I have to manage my career and plan it according to the guy, and I don't know where that guy is going to be, और मुझे कुछ नहीं पता. तो वो एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था कि ये भी नहीं पता कि रिश्ता कहाँ होना है, शादी कहाँ होनी है, और ये भी नहीं पता कि पढ़ना क्या है. और वो उस लिहाज से आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स हु वांट टू परस्यू देयर करियर एंड उन्होंने आगे कुछ करना है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपनी ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि अच्छा मतलब मैं कह देती कि बस मैंने अब अमेरिका का ही रिश्ता देखना है. ये नहीं हो सकता था बिकॉज it's already very difficult to find a guy. और उसके बाद से आप अपनी ये लगा दो क्योंकि मैंने अमेरिका में जाना है तो मुझे और अब आप you can't settle for someone just because वो अमेरिका में भी है. I mean ideal situation होती है कि अच्छा आप भी अमेरिका करना है, आपको अच्छा बंदा वहाँ से मिल जाए. But I get it. And when I would say कि अच्छा अमेरिका का रिश्ता देखें, वो और प्रॉब्लम्स के साथ आता था कि that I am here, that guy is there, how will I get to know that guy? मैं मतलब फ़ोन पर बात करें, लाइफ कैसी है, एंड स्पेशली लाइक अगर आप थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट से देखते हो, वहाँ पे रहने वाले लोग आपको नहीं पता कि वो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या मतलब आप फ़ोन पर आई थिंक इट्स जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट टू जज एनीवन ऑन टेक्स्ट एंड ऑन कॉल. एंड अगर आप कितनी देरी वहाँ पे चले जाओगे और वो कितनी देरी यहाँ पे आके आपसे मिल लेगा बस आपको जानने के लिए. सो या दैट होल प्रोसेस वाज वेरी स्ट्रेसफुल एंड बस कॉन्स्टेंटली बस रिश्ते आ रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को हम नहीं पसंद आ रहे, कोई हमें नहीं पसंद आ रहा. तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड आई feel very bad for all the girls who have to go through that. I remember कि मायदा की अम्मी जब मैं मायदा के घर जाती तो मायदा का ना रिश्ते बहुत आ रहे थे, रिश्ता नहीं हो रहा था, ठीक है. तो मैं जब इसके घर जाती थी और मेरी इतनी पहले हो गई थी, so I was literally जो आंटियों को नहीं वो मिल जाती. I was that for a lot of my friends. तो जब मैं जाती भी थी इसके घर तो इसको समझाओ
इसको कोई पसंद नहीं आ रहा, इसको कोई पसंद नहीं आता, इसको समझाओ कि देखो टाइम निकल रहा है, फिर नहीं आएंगे, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लाइक शी वांटेड मी टू लाइक गिव हर दोस लेक्चर्स कि मुझसे तो नहीं सुन रही है। और एक दफ़ा मुझे याद है, हम हमारी फ्रेंड की शादी पर जा रहे थे और हम तैयार होकर, मैं गाड़ी में तैयार होकर बैठने जा रही हूँ और हमना भी तैयार होकर आ रही है, पीछे से मेरी अम्मी ने इसको सीढ़ियों से रोक लिया, अच्छा रास्ते में इसको भी समझाना, इसको समझाओ अब इसके टाइम आ गया है कि देखो ये भी शादी हो रही है, अब इसकी भी हो गई है, अब उसकी भी हो गई है। इसको समझाना। एंड आई थिंक जिसने आप बताई थी ना कि इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स, एंड स्पेशली हमारी जब यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लास्ट सेमेस्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आई थिंक ये जोक्स तो तब से स्टार्ट हो जाते हैं कि रिश्ते ढूंढना शुरू हो जाएंगे घर वाले, एंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ द डिग्री बिकॉज उनके घर वालों ने साथ साथ ही रिश्ते देखना शुरू कर दिए होते हैं, एंड देन दोज गर्ल्स डिडंट गेट मच टाइम टू प्लान आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज दे डिडंट प्लान आउट, और आपकी जब शादी होती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, अभी तो आप बहुत ही बड़े चेंज में जा रहे हो, तो आप ऑलरेडी इस पोजीशन में नहीं हो टू प्लान आउट थिंग्स, तो आप तो कह रहे हो कि अच्छा अभी जो भी करना है थोड़े अरसे बाद होगा, देखेंगे, और फिर वो थोड़ा अरसा किसी के लिए, फॉर सम पीपल आता ही नहीं है कभी कि कि मैं प्लान आउट करती है, मैं कुछ देखती कि मुझे करना है। सो इसी तरह होता था। पर और मेरे जब मेरे भी अभी लाइक आई ग्रेजुएटेड 2 years बैक, एंड देन 2 साल का करियर, so but constantly back of the mind यही वाली thought रहती है, I don't know where I will end up, so मैं कितना ज़्यादा करियर को अभी सोचूं, because I am not sure where I will end up, I am not sure कि who I will end up with, so वो सारी चीज़ें constantly back of the mind चल रही थी कि अच्छा अभी इसको मतलब मैं बिल्कुल करियर हो जाऊँ, and then I might not find the जो भी मेरे घर वाले, मतलब अगर घर वाले अरेंज करें या मैं खुद, मतलब if I am pursuing someone, so I am not sure कि अगला बंदा उसको या मेरे करियर को उस तरह समझ रहा होगा या नहीं, कितना एक्सेप्टेबल होगा। एंड देन ऑब्वियसली अगर आप वैसे सोसाइटी देखो तो वो तो बोलेंगे कि लड़के का करियर है तो लड़की मूव कर सकती है, then like she can do, वहाँ पे she can do, like it's not like she has also built something, like nobody cares, nobody cares about the girl's career, कि अच्छा ये थोड़ी अनफेयर बात मुझे लगती है कि लड़का लड़की के लिए नहीं मूव होगा कि वो अच्छा उसने वहाँ पढ़ना है या उसने वहाँ जॉब करनी है, ही वोंट डू दैट, बट लड़की को करना पड़ेगा, एंड आई थिंक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर दोनों लोग ही अगर डॉक्टर हैं, किसी को अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई है पढ़ने की या जॉब करने की कुछ भी, तो वो लड़का आई डोंट थिंक ही विल बी वेरी फ्लेक्सिबल इनफ विद द आइडिया ऑफ मूविंग फॉर अ गर्ल, एंड even if the guy is, I think society pressure, ये बहुत बड़ा मसला है हमारा, कि even if he wants to and he's willing to, society is not. I think love marriages में ना थोड़ा सा difference इस तरह होता है कि like I've seen it कि a lot of the times love marriage में because you already know each other, तो there's a trust factor that's already there, then you can decide कि अच्छा and then you're already a team, तो उसमें फिर होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, even if the girl is doing better, तो लड़के को होता है यार she's at a better position, या हम दोनों के लिए बेहतर क्या है कि हम इसके उसमें मूव करें, and I figure it out. So I've seen couples जिसमें लड़की के लिए लड़के ने किया है वो, but उसमें they were love marriages, where because out of love एक तो आपकी ईगो वैसे ही बहुत कम हो जाती है, so the man is more willing to do it, and then trust, and then actually knowing कि अच्छा हाँ like कि what's better, right? लेकिन जब आपकी arranged marriage है तो then you don't know the other person, trust factor, उसका career, उसकी क्या life, उसका you don't know कि अच्छा how successful she will be, या is that even good for us? But and plus फिर मैंने जो है love marriages में ये भी देखा है कि a lot of the times people do long distance, so especially doctors. So what they do is कि अलग-अलग वो उस पे काम करते हैं first 2-3 years of their marriage, which I find very difficult, very sad and very difficult, but they do spend that time away from each other, and they pursue their own, and then whenever, especially जो लोग residencies कर रहे हैं अमेरिका वगैरह में, यहाँ से जो couple जा रहे हैं अलग-अलग जगहों पे मिलता है वो करते हैं, and then like I know many couples like that, and then once they're done with their residencies, then they start their life together, which I think is so difficult to live by yourself. In fact, somebody I know, she did her baby by herself, and obviously he was there and he visited all the time, but like distance, okay, and living alone and then taking care of the baby alone after that as well, so it's tough. I can't even imagine doing that. So but people do make that sacrifice for their career, but वही बात है कि बहुत rare होता है where women have the option to
take their career like that, right? Or put so much weight into it कि यार ये it matters in for people to understand that as well. Yeah. And I do think doctors में फिर लोग understand कर लेते हैं. If you have any other kind of career तो मुश्किल है. हाँ. तो मुश्किल है. हाँ. फिर वो होता है कि अच्छा क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की. हाँ. हाँ. For women. But don't you guys think like even in love marriages जो दोनों का बंदे होते हैं like उस point तक पहुँचने के लिए when you understand that person you have to spend substantial time with that person. Yeah, of course. Definitely. But हमारे यहाँ पे होता है कि पाकिस्तान में एक लव मैरिज ये भी होती है कि पसंद आ गई है तो रिश्ता भेज दो. हाँ. So आप ये होता है कि चलो पसंद आ गई है and then वो जब पसंद आई है ना तो वो उसको आपने एक रोल में देखा है बकायदा. ठीक है. बट जब आपने परस्यू करना चाहा है ना तो यू लाइक ठीक है करियर तो कोई मतलब इट्स समथिंग लाइक ठीक है सूटकेस में साथ पैक करके एंड देन वो बाद में देखी जाएगी. सो इट्स आल्सो दैट फॉर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर लाइक बिकॉज इट हैज हैपेंड विद माय फ्रेंड्स लाइक दे व्हेन दे हैड दैट वो गाय अप्रोचिंग देम दे न्यू कि यार काम कर रही है या वो है लेकिन बट जब उसको वो रिश्ते में कन्वर्ट हुई है वो चीज़ लाइक ठीक है काम है मतलब इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन स्टार्ट व्हेनेवर यू वांट टू और वो बाद में हम देखेंगे अभी ये वो सवाल नहीं है ये वो सो दे इट्स लाइक एन अनसेड थिंग कि अब शादी हो गई है तो काम तो छोड़ देगी और फिर बाद में देखेंगे जब. सो इट्स नॉट लाइक कि कोई इस पे एक्टिवली बात करता है कोई बात ही नहीं करता कर रहा इसके बारे में. आई हैव अ क्वेश्चन हियर. सो द थिंग इज कि मुझे इस तरह लगता है जो कि सोसाइटी बहुत सारी लड़कियों को नहीं करने देती है. आई नो समबडी हु ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर अ मास्टर्स आफ्टर हर ग्रेजुएशन बट उनको कभी जाने नहीं दिया कि मास्टर्स के लिए चली जाओगी फिर तो पता नहीं कि किस तरह ही होगा रिश्ता. लाइक छोड़ो अभी तुम पहले रिश्ता करो फिर करती रहना मास्टर्स. कभी नहीं किया शादी होगी कभी नहीं किया बट क्या पता कर ले फ्यूचर में. बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ नहीं हुई उस टाइम पे क्योंकि दे वांटेड कि यार वो पाकिस्तान में ही रहे क्योंकि रिश्ते आ रहे हैं ये वक्त अगर गुजर गया तो फिर रिश्ता. एंड आई गेट दैट कंसर्न बिकॉज होता भी है लोगों के साथ कि अच्छा वक्त गुजर गया और नहीं होता फिर ठीक है. बट आई ऑल्सो फील लाइक कि इवेंचुअली हो भी सकता है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्रायोरिटीज व्हाट मैटर्स मोर. Like for a lot of people it's also like अच्छा ठीक है जाए अपनी लाइफ एक pursue करे and someone will come along the way. So even if you go for master you will find somebody there, you will find someone where you find your job. बस जहाँ होनी है वहाँ तो हो जानी है ना. ये thought नहीं है. Why do you have to actively just stop everything and wait for the rishta? Yeah. Does that make sense? No. To stop your life to get married? No. It's a waste of a lot of your years. I think it's more important कि आपकी individuality और आप क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी के साथ और उसमें if somebody fits in. Yeah. But then the parents will say कि टाइम गुजर जाएगा. अच्छा पेरेंट्स के बिहाफ पे आई थिंक उनका कंसर्न भी ठीक होता है कि वो ऑब्वियसली उनको फिक्र होती है कि अच्छा अब बीत वक्त है क्योंकि जो हालात है ना मतलब आई टेल यू जब भी कोई रिश्ता प्रोफाइल आ रही होती थी और अब्बा दिखाते थे कि अच्छा ये अब लोगों की जो डिमांड्स लिखी होती थी कि जी एज 22 to 24 एंड फिर जी द टिपिकल tall, fair and you fit the bracket. Tall, fair and slim. So congratulations. और बहुत मसले होते थे जो उनको नहीं पसंद आते थे. तो खैर जब ये आता था कि जी एज ब्रैकेट 26 या 27 की जो लड़की है ना उस पर बहुत प्रेशर हो जाता है फिर और वो फिर पेरेंट्स को भी होता है कि भाई उम्र बड़ी ज़्यादा हो गई है. तो आई थिंक पेरेंट्स का कंसर्न भी किसी हद तक वैलिड है कि उनको थोड़ा होता है कि अच्छा अब उम्र ज़्यादा हो रही है बिकॉज सोसाइटी में वो जिस सोसाइटी में होते हैं या वो रिश्ता ग्रुप्स जो उन्होंने ज्वाइन किए होते हैं वहाँ पर डिमांड्स ही लड़कों की इस तरह होती हैं. ठीक है लड़कों की फैमिली लड़कों की होती है नहीं लेकिन उनकी माँओं की पेरेंट्स की होती हैं अब्बों की होती है. या तो वो फिर एज ब्रैकेट अगर निकल जाए तो वो मुश्किल ऑब्वियसली स्ट्रेस आ जाता है हर लिहाज से. एंड फिर ये होता है कि अच्छा अगर 27 से लड़की ऊपर हो गई है तो फिर बाकी सब कुछ बड़ा परफेक्ट होना चाहिए फिर उसकी शादी होएगी. हाँ. और पता है लोगों को ये भी होता है
वो वाली चीज़ के इट्स अ थिंग कि बड़ी हो गया तो अब उसको मोल्ड करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज पीपल वांट के औरत की आइडेंटिटी तो इंडिविजुअलिटी जितनी कम से कम हो ना वो बेहतर है बिकॉज दैट्स you can control them more. You can define their life. Typical हमारी हाँ मतलब दबाना ना भी हो but you can define and control their life then and what they want to do with it. फिर आप उनको एक guide और direction में ले जाओ. But जाहिर है the older you grow the more आपकी individuality बढ़ती जाती है. आप firm हो जाते हो. You have discovered yourself. आप career में भी आगे पहुँच गए हो. आप अपनी thoughts में भी आगे पहुँच गए हो. You have a very well defined sense of individuality which is very difficult to mold into your life. So that's that is also why people want younger girls ताकि वो इतनी ज़्यादा आगे ना हो अपनी ज़िंदगी में कि हमारे हाथ से ही बाहर निकल जाए. So Usra, let's talk about you कि अभी like ठीक है तुम्हारे 2 साल हो गए हैं in your career and अभी शादी नहीं हुई and I think शादी का इसमें कोई सीन भी नहीं है right but lucky but when you think about your future so what do you like तुम्हारे जहन में obviously तुम सोचती होगी अच्छा मैंने अपने करियर में ये करना है या मैंने मास्टर्स करना है या जो भी मैंने करना है तो उसमें तुम्हें होती है ये थिंग ये अनसर्टेनिटी या मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज I'm the only person in my family right now who is doing a job and that's also very different, not a conventional job, right? A part of my job is to be on camera now, right? And जब आप YouTube पे जाते हैं, Instagram पे जाते हैं, even now you know तो search करते हैं तो my face does show up. So वो it's not something that has happened in my family ever before, right? और हमारे यहाँ ये होता है कि like families में रिश्ते वैसी arranged marriages हो रही होती हैं तो obviously आपने वैसे भी नहीं assume किया हुआ होता कि यार लड़की बहुत career oriented होगी या ये. So it's really difficult for me to when I think about it कि अब क्या होगा अब मेरा क्या होगा because अगर मैं 2 साल पहले सोचती तो it was like okay ठीक है एक तरीके से होते हैं रिश्ते हो जाएंगे. It was less complicated without this variable in it. Now it's more complicated because नॉट कि मुझे ये करना नहीं है या ये हो रहा है तो अब मुझे उस वजह से वो नहीं मिलेगा. दिस इज समथिंग आई रियली रियली वांट टू डू दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर राइट एंड दैट्स व्हाई आई एम परस्यूइंग दिस करियर बट एट द सेम टाइम इट्स मेक्स इट डिफिकल्ट कि कि अब हर कोई नहीं समझता हर कोई नहीं समझता कि ऑनलाइन सडनली आपने अपने नंबर ऑफ सूटर्स को रिड्यूस कर लिया. वो वाली चीज़ मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा एंड trust me, I was talking about this last night. I was on call with my friend and I was telling her, we were talking about like how I turned 24 and she was like, we were discussing that. And then तो वो बात हुई थी and then she was like, Usra, I feel like you can never do arranged marriage. You're not that sort of a person now. You have a life. Because तुम बहुत individuality अपनी discover कर चुकी हो. So true. Just like you have built something for yourself and people don't understand. Like you've become a very career-driven person with some foresight of what you want from your future. If you are blank, it's easier to get. अब mold नहीं होगी. Mold नहीं हो सकती. तो वो बात हो रही थी and then now when my family understands that चलो अच्छी बात है. So अम्मी बीच में जब भी वैसे बात हो रही होती है तो वो बोल देती है Usra के लिए हम इस तरह से नहीं ढूंढ सकते जैसे अब हम. So she gets it. She understands it. But the fear is there, like even we will understand that मैं अब उस तरीके से नहीं हो सकता and I will have to find like suitors कम हो गए because there's this career that I do not want to give up even if when I get married. तो वो बहुत कम लोग उससे बहुत ज़्यादा okay. And even if the boy is maybe their family isn't. तो वो वाली सारी चीज़ें बैग में घूम रही होती हैं यार क्या होगा मतलब क्या होगा. तो जब तक नहीं हो रही बात चुप करके साइड पे बस छोड़ो नहीं लेना but it does it is a genuine fear that I have like what कि नहीं समझ में आएगी नहीं समझ में. बट मुझे इस तरह भी लगता है कि थोड़ा सा लाइक थिंग्स आर चेंजिंग एज वेल लाइक पीपल आर मोर ओपन टू all kinds of women now. पहले मतलब not most people and not in very typical arranged marriage settings but a lot of the boys like they don't care about tall
young, you know, like a lot of the boys, they care about chemistry, they care about The boys personality. do, but the problem is family and the mothers. Yeah. Like उनकी particular demands होती Yeah, हैं yeah. कि अच्छा लड़की देखने में ऐसी हो और कपड़े ऐसे हो, भाई मेकअप भी ना ज़्यादा लगाओ, like Makeup भी ना ज़्यादा Especially in our Desi families, you know, because I think it's a running joke as well. Like you're not getting married to the boy, you're getting married to the family. Yeah. So लड़कों से ज़्यादा लड़कों के बेचारों की डिमांड भी नहीं कोई सुनता ना. उनके घर वाले, you know, हमें पता है. Like it's the same with girls. अभी भी पेरेंट्स समझते हैं कि they can decide, they can choose better. Yeah. Because they have seen, you know, a The lot in world. life. Yeah. And the worst in life. So they're like हम बेहतर देख सकते हैं. But like you said, boys or girls both have changed now. They have changed expectations. You know, it's not about I think most of girls are not now looking for stability. They're looking for mental compatibility. Yeah. chemistry. You know, They're not Yeah. looking for stability. Yeah, it's like we can build it together. You know, हाँ, we can build हम खुद ही कर लेंगे financially. and especially girls who are well into their careers, उनको होता है कि यार हो जाएगा, तो पैसे हम भी आने कर जा लेंगे, जाएंगे. पैसे कर लेंगे, मिलके कर लेंगे, वो भी कर लेगा, मैं भी कर लूँगी. Yeah. But what about, you know, वही mental compatibility, what The about bond. the bond. Yeah. Okay. So कभी कभार इस तरह भी होता है कि अगर आपकी so recently had a conversation with another friend of mine जिसमें because she's very smart, so and she's very like Usra, you know, she's pursuing her degree, she's doing her work, and you know, she's been talking to a lot of people in order to get married, you know, but वो एक हमेशा इस पॉइंट पे आती है कि यार जो जिससे मेरी बॉन्ड बनती है वो ना मेरे लिए मुझे सूटेड नहीं लगता, क्योंकि या उसकी हुई आदतें बहुत ख़राब हैं, वो किसी लिहाज से टॉक्सिक है, कि मे बी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, लाइक सिवियर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, या कोई और इशू है, लेकिन बॉन्ड बहुत बहुत अच्छा, मज़ा आता है, साथ केमिस्ट्री है ये. लेकिन जो आपके जो परफेक्ट जो आप होता है कि यार वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, ऐसा हो, उन वाले बॉयज से बॉन्ड ही नहीं होता. सो व्हाट डज वन डू इन अ सिचुएशन लाइक दैट? Because then what does matter? Because at the end of the day, देखो, when you are also a smart, intelligent woman, then you also understand that he's not just somebody that you share a bond with, but somebody who is going to be the father of your kids. Yeah. So do you want to marry a very reckless person who you have an excellent bond with, or you want to marry someone who, you know, who checks the boxes of a decent human being? Because that matters at the end of the day. So you can find someone who understands your career, who is a super feminist, who is perfect, but if you don't have a bond, फिर क्या? बहुत मुश्किल है ये तो सवाल ही आपका. और आपकी लाइफ में एक्चुअली वो हो, like you are there where you see someone you have a bond with, and you see someone who is interested in you and is like perfect. तो ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करेगा? आई थिंक सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अल्लाह मियाँ ने कोई कस्टम मेड आपके मुताबिक लड़का नहीं बना के भेजना कि जी बॉन्ड भी परफेक्ट है और बाकी सारे वो भी परफेक्ट है, बॉक्सेस भी टिक कर है. तो आपको आई थिंक यू शुड मेक अ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट. मैंने बहुत किए रिश्ते में कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है. एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइक आई रिमेंबर देयर वाज दिस रिश्ता, देयर वाज दिस गाय जो कि मेरा बहुत लाइक परफेक्ट सब फिट था, एंड देन द प्रॉब्लम वाज दैट ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड ही वाज नॉट वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ठीक है. तो मैंने ना अपने अब्बा से पूछा कि अच्छा ऐसे केस में क्या करना चाहिए. तो मैं बाबा वाज लाइक कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना वो इंसान का इखलाक है. हाँ, और कि वो इंसान मतलब आपका कितनी रिस्पेक्ट करता है, और ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज़ ये उसकी पर्सनैलिटी है. दूसरी चीज़ें हैबिट्स हैं. हैबिट्स इंसान की चेंज हो सकती हैं. क्या पता जो आज बड़ी परफेक्ट हैबिट्स हैं जिस इंसान की, वो कल को वो कुछ और काम करने लग जाए जो आपको नहीं पसंद है. तो आपको हैबिट्स के उस पे आपको इंसान को नहीं जज करना चाहिए, वो बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ. तो एज अ पर्सन वो इंसान कैसा है वो ज़रूरी है. बट देन ऑन द अदर हैंड आई बिलीव द बॉन्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. But the question is, do you think that somebody who you feel, because
bond over time बन सकता है. Yeah, I was coming to that. बन You सकता get है. comfortable with some. Yeah, you get comfortable. Yeah. You will get to know each other. थोड़ी एक्सेप्टेंस आपको आ लानी जाती पड़ेगी. है, वो चीज़ आ जाती है आपकी, you know. तो वही बात है ना कि फिर what do you do? So when my friend asks me, Hanna, what do I like? Bro, I don't know. This is all you. I think if the situation is like you have someone like you bond really really well with and बहुत मजा आता है, and then there is someone who ticks all the boxes and then but you don't have the bond yet with that person. So इस time पे you have to sit back and make that pros and cons list and reflect basically जिसको हम कह सकते हैं, like you know, do you अभी तो thrill है. हाँ. But like you said, like that person is going to be the father of your kids. Like you know, वो सारी चीजें देखनी है. So अभी thrill चाहिए, like you can work because on that. by the way, like when you Yeah. grow, when you जब आपकी शादी होती है और जब रियल लाइफ आती है, प्रैक्टिकलिटीज आती हैं और लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो थ्रिल इतना मैटर नहीं करता. You need somebody who is stable, who can make smart decisions for you and your Yeah. family. You know, because there is a chance. देखो, thrill will fade because your life will become complicated and like there will be times and there will be hard times. There is nobody जिसके मुश्किल वक्त नहीं आएंगे या मुश्किल वक्त भी ना हो, but just difficult life decisions यार. Like कि आपने पैसों के साथ क्या किया, आपने इन्वेस्ट कैसे किया, आपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर किया, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर किया, राइट? And if that thrill sort of fades, and which will fade, and then you end up with somebody who can't make one right decision Yeah. over somebody else who you didn't have a bond with but eventually will have a bond with. You probably will have a bond with, because at the end of the day हमने अपने कल्चर में बहुत सारी अरेंज मैरिजेस देखी हैं, and we've seen how wonderfully they've turned out. Yeah. Right? So people do find their way to Connect with each other. Yeah. It's just like you it becomes a habit now, being with them, doing things with them, then you sort of become comfortable with each other. And वो आपने बहुत slowly and gradually build किया होता है, तो it lasts longer than you know that thrill and the magic Passion. yeah in the start. Yeah. Because जैसे आप thrill का mention करी थी, I think it's the same with like people in love, right? Love is something that's a verb that you choose every day. Yeah. Right? It's not something that's just a feeling that you feel in the stomach. Yeah. Right? Yeah. कि अभी तो हो रहा है, बस जब बाद में देखेंगे. Like it's not like that. Yeah. So at the end of the day, it's the decision. Like maybe let's go for the boring or that you do not have the connection with, but you can build it. Yeah. Build over time. I think ये आपको पता चल ही जाता है कि आप क्लिक कितना कर रहे हो उस इंसान से, और आपको पता चल जाता है कि अच्छा कल को बॉन्ड बनने के कितने चांसेस हैं, पोटेंशियल कितना है उस इंसान में. एंड आई रिमेंबर कि मेरी इतनी दोस्त हैं यही थ्रू द रिश्ता प्रोसेस, एंड जिनकी शादियों को 2-3 साल हो गए हुए हैं और पता नहीं कितने कितने साल की जी उनकी लव मैरिज चल रही होती थी, लव चल रहा होता था. तो दे वुड बी लाइक ये सब ख़त्म हो जाता है बाद में जब आपको बिल्स देने पड़ते हैं और फिर आपकी असल लाइफ स्टार्ट होती है, तो फिर लव से ज़्यादा देयर इज रिस्पेक्ट एंड देन देयर इज सो आई वाज कमिंग टू दैट कि चलो अगर आप बिल्कुल एक लव को बाहर निकाल दो, आप एक अरेंज मैरिज उसमें देखो या अरेंज लव छोड़ो, बट व्हाट आर सम थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट should be important for anybody when they are looking to get married, कि उसमें आपके रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस इंसान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. What are those top for you? I think the most important top 3 things were respect, honesty, and how much the other person values my thoughts and my just me, my existence. Yeah. I think for me respect is number 1. I think I've told you that many times कि इंसान का respectful होना towards not just you but just be a respectful person is extremely important. That is true. Love is very important to have between a relationship, I will say that, but respect trumps love. Yeah.
ठीक है, because no matter if you are disrespected, no matter how loved you are, and that is possible. Like if people think कि अगर love है तो automatically respect है, that is not true. अगर respect है तो automatically love हो जाता है. I think it's the other way. I don't know that, but I do know this कि love will not ensure that the other person will respect you. Yeah. always. They may really disrespect you. They may really not treat you the right way just because, you know, because the thing with love is that it's an emotion full of a lot of passion. So it defies logic. It defies a lot of practicality. It defies a lot of sensibility. Yeah. So agar if that person is not a very stable or sorted person, then love can actually be a very dangerous thing. Yeah. ठीक है, so it's important that the person is stable and sorted and respectful and इखलाक उसके अच्छे हैं generally life Yeah. में. That's more Yeah, important. मैं ये कहने वाली थी, like your father said, it's something like इखलाक की बात है सारी. Like and it's not like something for me. हाँ, सबके लिए. सबके लिए generally आपको वो उसमें देना चाहिए. Like and it's the same for me. Like respect है तो सब है. हाँ. Like you can build every other thing over Yeah, it. yeah. Like if you have respect, then you have everything. And then उसके बाद I think for me it's like how secure of a person he is. Yeah. Like because उससे बहुत सारी चीज़ें build हो सकती हैं. Like you know वो सारी discussions जो आपने करनी है ना वो तभी हो सकती हैं. Like if the other person. देखो अगर लड़के की ईगो बहुत फ्रैजाइल है हाँ. तो he will try to control you in a lot of aspects of his life because then he will fight for that power now. Yeah. And that's very common. Like आपकी किसी भी couple के अंदर पावर स्ट्रगल और होती है, पावर डायनामिक होती है तो पावर स्ट्रगल होती है. And it really depends on like both personalities as well. कि you know how important their own Yeah. क्या उसे कहते हैं to be equal in power for them is. ठीक है, और अब लेकिन अगर आपके बीच में रिस्पेक्ट है तो वही चीज़ आप एक तमीज़ के तरीके से if you respect Address each other it. equally तो लेकिन अगर आपके अंदर if you are insecure तो you will always fight for the power, you will try to put the other person down. और ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब लड़का सिक्योर नहीं होता, उसकी इनसिक्योरिटीज होती हैं तो फिर वो अपनी मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, whether in the form of अच्छा पैसे और कि उसके ज़्यादा होने चाहिए, बीवी के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी और चीज़ें हुई. he will try to exert that control or that power just to protect his ego. Yeah. तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है इट्स एवरीथिंग. क्योंकि जो सिक्योर इंसान होगा वो आपको ट्रस्ट भी करता है. जो इंसान इनसिक्योर होता है ना वो आपको कभी ट्रस्ट नहीं करेगा. और अगर आपको ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कभी कुछ भी नहीं. फिर वो आपको इस चीज़ के लिए भी ट्रस्ट नहीं करेगा. अगर आप इफ़ यू आर द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ यू नो जो टिपिकल वाइफ होती है जो कि सब कुछ आपके लिए कर रही है, घर चला रही है, बच्चे पाल रही है, वो एक सपोर्टिव रोल कर रही है आपकी लाइफ में, तो आप उसमें भी नहीं ट्रस्ट करोगे. जिस तरह इस तरह के भी होते हैं लोग कि बिकॉज कि यू नो अगर उसकी बीवी है जो उसने अपना करियर छोड़ के भी वो बच्चे पाल रही है, ठीक है, तो अगर बच्चा रो रहा है ना तो उसको 10 ताने देगा उसके बारे में कि बच्चा क्यों रो रहा है, तुम्हें नहीं संभालना आता. हाँ, तुम्हें संभालना नहीं आता, ये क्यों हुआ, बच्चे को चोट क्यों लगी, क्यों लगी, तुम देख नहीं रही थी. ये वाली जो चीज़ है, लेट हर डू हर थिंग, यू डू योर थिंग. वो तो नहीं आके तुम्हें कहती कि तुमने अपना काम कैसे किया है, यू नो. So that sense of security is very important because it makes you a trusting person. Yeah. Like you were mentioning ना कि इस तरीके से फिर कहना शुरू कर देते हैं, and then most of that insecurity also comes in the form of like you know मोटी लग रही हो या फिर अच्छी नहीं लग रही थी या ये अच्छा नहीं बना था या वो like sort of like saying these things that can really put the woman कि आप उसकी कॉन्फिडेंस छीन रहे हो. कॉन्फिडेंस ऐसा होता है. मुझे जब मैं वो क्वेश्चन स्टिकर डालती हूँ ना अपने इंस्टा पे तो इट मेक्स मी रियली सैड बिकॉज मुझे इस तरह के ना वो आते हैं कि माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज सेइंग दैट आई नीड टू लूज वेट, माई हस्बैंड इज ऑलवेज सेइंग मीन थिंग्स टू मी, तो व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई मेक माई हस्बैंड हैप्पियर, या शुड आई गेट आउट ऑफ दिस. लाइक लोगों के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं विच आर वेरी वेरी painful. Yeah, they're painful and they're very like pressing issues. You know, and I don't even know how to address them. Like, you know, if your husband, somebody you live with, like it's such an, सोचो जिसके साथ आप actually
लाइक अपनी लाइफ पूरी गुजार रहे हो और वो आपको हर वक्त इतना इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हैं टू द पॉइंट कि उसने आपसे सेल्फ एस्टीम छीन ली है आपकी सारी। एंड पता है दुनिया के बाकी लोग आपको जो मर्जी कहते रहे लेकिन आपका हस्बैंड क्या कहेगा वो सबसे ज्यादा आपको मैटर करेगा। एंड द प्रॉब्लम इज इट कैन रॉब यू ऑफ योर एंटायर सेंस ऑफ सेल्फ। कि ये इमोशनल अब्यूज के बारे में इन अ रिलेशनशिप इतनी वो नहीं है अवेयरनेस और आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप कहते हो कि अच्छा वैसे ही कह रहे हैं, वो शायद मेरा ख्याल रखता है तो इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा तुम ऐसी हो तो तुम ये तो तुम वो, बट वो कांस्टेंट बातें और कांस्टेंट टॉन्टिंग आई वुड से ताने कि तुमने ये नहीं किया, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम तो बड़ी मुश्किल हो। एंड वही बात कि मोटी लग रही हो या नॉट जस्ट लुक्स एनीथिंग बच्चा क्यों रो रहा है। हाँ, तो वो बस आप पुल डाउन कर रहे हो ना, टांगे खींच रहे हो उसकी, कॉन्स्टेंटली जमीन में घुसा रहे हो उस इंसान को। वो वाली बात है कि आप पूरा दिन काम करके आओ और फिर औरत जो बेसिकली पागल हो गया घर संभाल के बच्चे देख के और आप आके बोलो कि यार घर साफ क्यों नहीं। हाँ screw you don't know what I've been doing all day. It's so easy for you to come and say that I've come home to a dirty home. I've come back to a dirty home, but you she's been trying her best. ये नहीं है thought. एंड इसी के ऊपर जो इमोशनल अब्यूज़ वाली चीज़ है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह से होती है कि जो तुम कहेंगे ना कि लोगों को पता नहीं चलता बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स इमोशनल अब्यूज़ इज़ रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सम big beautiful gestures. So a lot of the times what will happen is कि जो आपको दिन रात ताने मार रहा है ना वो आपकी बर्थडे में ना कुछ बहुत बड़ा कर देगा, मैसिव ओवर कॉम्पेंसेटिंग और या वो आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ला देगा या वो मतलब किसी दिन कुछ बहुत लाइक वो 2 दिन आपको ना टॉर्चर करके मेंटली तीसरे दिन कहेगा कुछ बहुत खूबसूरत एंड ओवर कॉम्पेंसेटिंग बिहेवियर लाइक बीमार होगी हो तो वो बट And that is the dangerous part where when you really think about this person you say ये वो तो बहुत अच्छे हैं वो तो मेरे लिए ये भी करता है वो चीज़ें नहीं सोचते हो करता है और तो मेरे लिए ये भी करता है और आप कहते हो नहीं यार मैं गलत सोच where you gaslight yourself because of those big gestures कि यार no the other person isn't so bad ना मैं ज़्यादा sensitive या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या वो शायद सही कह मुझे ना बेहतर करना चाहिए या वो and obviously it's not so black and white. I'm not saying that women are perfect. I'm sure that in a lot of the homes like women are at fault, but एक most common situation and like हम एक perspective की उस तरह बात कर रहे हैं. So इस तरह भी होता है. बस मुझे लगता है कि किसी भी relationship में और ये चीज़ मैंने खुद सीखी है over time. Shame should not exist. When you shame each other, shame for anything. हाँ जो कि बहुत कॉमन है जो सब करते हैं जो मैंने किया जो हमने किया नहीं यार इस तरह भी होता है कि लाइक स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट में गेट मैरिड तो आपको ना अगले बंदे की बहुत सारी चीज़ें बॉदर करती हैं ठीक है जिसके लिए आप उन्हें शेम करते हो एंड यू डोंट इवन रियलाइज दैट इट्स एक्चुअली शेम जो आप कर रहे हो जो आप कह रहे हो कि यार तुम फलाना क्यों नहीं ठीक कर सकते लाइक कमरा क्यों नहीं साफ रख सकते ये क्यों नहीं कर सकते एंड देयर इज अ डिफरेंट वे टू अप्रोच इट एंड देन देयर इज अ शेम वे टू अप्रोच इट वेयर यू आर जस्ट शेमिंग द अदर person because you are so annoyed and irritated and you have no bad intentions but you do bring that shaming into your relationship जो मैं बताऊंगी कि औरतें भी बहुत ज़्यादा करती हैं कि you know like shaming the husband for not doing this right and not doing that right and blah 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 I feel like those things are important to be conveyed that are really bothering you about your spouse, but shaming is not the answer. Because मैंने एक चीज़ I recently did a post on problem solving approach. I don't know तुमने देखी थी उसके अंदर मैंने लिखा था कि shaming actually never improves the outcome. तो बच्चों को भी अगर आप शेम करके या पनिश करके कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करोगे वो ऊपर से थोड़ा सा शायद बेहतर बिहेव कर ले but they don't when you shame someone they don't genuinely change on the inside they just feel like shit that's all you know and maybe they will do things to please you but actually you need an open heart and you need better communication and you need to empathize. The moment you start empathizing with somebody who you think is doing wrong, they will do better. But the moment you start shunning them that oh my god you are just wrong and you are doing oh my god आप guilt और shame से treat करोगे तो
नो नहीं होगा। इट्स एक्चुअली उससे क्या होता है कि जो अगला बंदा है ना बहुत रिट्रैक्ट कर जाता है कि ओ ये तो हर बात पे ऐसे कहती है। हाँ, वो रिट्रैक्ट कर जाता है, जैसा दैट विल मीन कि यू नो इफ यू आर डूइंग दैट अ लॉट टू योर हस्बैंड और यू आर डूइंग दैट अ लॉट टू योर वाइफ, तो दे विल रिट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, you know, and that doesn't actually solve, because I have been at the end of shame and it really made me retract in a relationship that I had. Ki then I was like, nahi, like I can't be perfect and I can't do all these things, but when treated with love and empathy, then you really do it better. But I honestly think for young couples and people who are newly married, they first need to go in with this thought that you are not getting married to change the person. जो कि शुरू में ना आपको बहुत अर्ज होती है, बिकॉज आपकी शादी होती है ना, यू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पर्सन, यू जस्ट लाइक इसको मैंने सीधा करना है, इसको मैंने चेंज करना है, एंड you start trying to change the other person, when in the start like just let them be. Yeah. You know? And over time you can work on a lot of things, but शुरू में वो space देना बहुत ज़रूरी है, and then safe learn space. to empathize and communicate better. Yeah. It's actually very complicated. Yeah, that's exactly what I'm thinking. It's बड़ा मुश्किल है very यार। complicated. Yeah. लेकिन मुज़म्मिल मुझे कहते हैं, जैसे दिस समथिंग आई हैव लर्न, लेकिन मुज़म्मिल मुझे कहते हैं कि नहीं अच्छा था कि तुम जो हो ना हर कुछ दिनों बाद तुम एक फिट थ्रो कर देती थी, ये सही नहीं करते आप, ये सही करते हैं ये क्या बकवास है, यू नो, बिकॉज ही इज़ लाइक कि वो फिर होता है कि फिर उससे बंदा जो है अंडरस्टैंड करता है कि अगला बंदा कितना तंग हो रहा है। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, टू सम लेवल दैट्स ओके, बट दैट बिकम्स अ नॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ, वो इतना कि there's a very thin line between where it becomes abuse. Yeah. So that is the part where you have to be very very careful about. आप दोनों sides पे आप नहीं extremes पे नहीं जा सकते कि बस आप जो है एक कुछ भी ना करो, होकर बने रहो, because जाहिर है आपने एक साथ survive करना है ना, आप दोनों ने खुश रहना है, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इतना ज़्यादा कर दो कि वो border line जो है abuse हो जाए. हाँ। And I think it ties back to, you know, the thing that, you know, if you have self-awareness and individuality, so it's easier for you to understand the pattern and understand कि, you know, it's becoming abuse now, or it's not like, you know, कहाँ पे वो lie कर रहा है. But if you are not, and if you didn't get the time to, you know, अपने आप को भी समझने की, and then, you know, if you're not that self-aware and then you're not very have the sense of individuality, फिर आप कहते हो कि यार इतना कुछ कर रहा है, इतना कुछ कर, वही वाला कि, you know, इतना कर रहा है मेरे लिए, इतना कर रहा है मेरे लिए, तो you don't even have anything to compare with, or, you know, just to sit back and reflect on it. Yeah. Because you do not know. You do not know any other side. Yeah. So I read a lot about these things, and मैं पढ़ी थी कि शादी होने वाली है. हाँ कैसे करना है, क्या करना है आगे। तो मैं एक जगह पढ़ी थी कि ये टिपिकल जो अब्यूजिव लोग होते हैं ना, उनका एक पैटर्न इस तरह होता है कि वो एक बहुत ग्रैंड गेस्चर थ्रो करेंगे जस्ट टू गेन मोर पावर ओवर यू। या कि अच्छा अब मैंने ये किया, अब ये जो सी है लाइक शील जस्ट गिव इन, एंड और फिर आप वो नया एक अब्यूजिव पैटर्न आएगा। एंड वो वही बात है कि फिर आप उसी चीज़ में रहते हो कि यार ये तो अच्छा है, ये तो इतना करता है मेरे लिए, एंड यू नेवर रियली रियलाइज कि आप किस पोजिशन में उस रिलेशनशिप में। तो या दैट like it's something you can never judge. Start में तो आपको पता भी नहीं लगता, आपको बहुत थोड़े से बाद पता लगता है, oh I've been एक्चुअली पता है क्या, अब्यूसिव रिलेशनशिप की मैं एक चीज़ बताऊँ, एक तो ये ऊपर से ना जो अब्यूसिव लोग होते हैं जनरली दे से वन थिंग एंड दे डू अनदर, ठीक है। सो व्हाट दे गोइंग टू से इज दैट दे विल से कि जब आप एक कॉन्वर्सेशन में कोई चीज़ उनके साथ डिस्कस करोगे तो वो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है फिट है, मुझे तो इससे कोई इशू नहीं है, पर जब आप वो करोगे ना तो उनका मुंह बन जाएगा। डू यू गेट इट? एंड इट रियली कंफ्यूजेस यू लाइक ओ शिट, अभी तो ठीक था, आई थॉट दिस इज ओके, यू नो, ओ शिट, यू नो, ओ पैसिव एग्रेशन। सब लोग पैसिव एग्रेसिव होते हैं, तो जिससे ना आप हमेशा अपने टोज पे रहते हो, यू ऑलवेज ऑन द एज, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या चीज़ बुरी लग जाएगी, मूड ऑफ होगा। लेकिन जब खुश होते हैं तो ग्रैंड जेस्चर करते हैं, जब गुस्सा होता है तो वो पैसिव एग्रेशन में होता है। एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू जज इज कि when you are in the presence of an abusive person, and this is not just about marriage, anywhere, you will feel something in the pit of your stomach that makes you very uncomfortable.
कि and you just have to be aware कि ये हो रहा है आपके साथ. You know, like, and you कि why do I feel so much discomfort in the presence of this person? And it's true, it happens. Actually, if you even Google कि how to tell if you are being emotionally abused, तो लिखा हुआ है that you will feel something in the presence of that person in the pit of your stomach. बस आपने gut feeling को अपनी पहचानना है. Yeah, and you shouldn't ignore it. You should Yeah. ignore it. Then that means कि अच्छा, red flag, need to do something about this. Yeah, कि how do I now resolve this issue in our relationship? और Yeah. emotional abuse का problem ये है कि वो आपको चुपके से ना it robs you of everything, especially your self-esteem. Yeah, and I believe कि emotional abuse मतलब खैर आप इतना compare नहीं कर सकते हो physical abuse और emotional abuse को. मतलब physical abuse भी बहुत बुरी है, but then emotional abuse आपका दिमाग ख़राब कर देती है, and it's just too much trauma and it's difficult to recover from it. The difference is यार physical abuse भी आपका दिमाग खराब कर देती है, लेकिन physical abuse is easier to recognize ना. Yeah. You can You see, know that you you're know, being you know, yeah. With mental abuse, you don't You a lot of the know. times you are unable to understand then- because emotional abuse का सबसे बड़ी चीज़ है gaslighting, हाँ. जिसमें आपको अगला बंदा भी because of the passive aggression, अगर वो passive aggressive है ना तो आपके लिए पता नहीं क्या किया और फिर आप जाकर पूछ के तुम्हें ही लग रहा है मैं तो ठीक हूँ, Overthinking. तो आप gaslight हो जाते हो कि अच्छा मुझे ही लग रहा होगा आपके, but actually आप it's very real what you felt. Yeah. और फिर और आप भी अपने आप को गैस लाइट करते हो, वो भी आपको गैस लाइट करता है, तो you're just confused. Yeah, like, what the hell is Yeah. I think with the feelings that one thing that I've realized is if you have felt it, it's valid. Yeah. कहीं पे भी किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी पॉइंट पे लाइफ पे अगर आपको कुछ महसूस हुआ है इट्स वैलिड. It's valid. और मैं यही चीज़ कहती हूँ कि ये चीज़ एक सिखानी चाहिए हमें, मतलब अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए और सबको ये चीज़ लाइक एक फैक्ट होना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है और कह रहा है कि आई फील दिस, तो आपने उसकी इमोशन को इनवैलिडेट नहीं करना कि नहीं यार तुम्हें एम ही लग रहा है. मतलब अगर उसको कोई चीज़ लग रही है तो आप थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करो कि क्या मैंने ऐसा किया है जो उसको ऐसा लग रहा है, कि उसको ऐसा लग क्यों रहा है. आप थोड़ा सा तो मतलब करो. उसी वक्त अगर आप शट डाउन कर दोगे कि नहीं बस तुम तो लाइक बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो फिर इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. एंड वही बात है कि आप रिट्रैक्ट कर लेते हो फिर अपने आप को. बात ये कि फिर देन आपने एक वॉल बना ली कम्युनिकेशन, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट. The person will not come to you saying कि वो ये हुआ. वो बेचारा अपने फीलिंग्स लेके बैठ जाएगा. Yeah. But man, this is so tough. Yeah, but of course it's not like that in all relationships. Yeah. And mostly like these things like they come and go, आप साथ साथ figure out कर लेते हो, इतना कोई big deal नहीं होता. लेकिन जो recurring issues होते हैं ना, उसमें you really need to realize कि what's going on. कि अगर एक चीज़ है जो आपको bother कर रही है और वो ठीक ही नहीं हो पा रही आपकी relationship में, तो then you need to realize कि यार where you are going wrong. Maybe you are approaching the problem in a wrong way, or what is the problem with the other person that they are unable to come on the same page to fix this thing. And वो मैं कहती हूँ कि लाइफ में किसी भी चीज़ में, and that includes in marriage, that you need to have a problem solving approach, and not a panic cry emotional approach. And you need to be flexible कि आपने आने वाले हर दिन के साथ बेहतर होना है. अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है. अपने रिलेशनशिप में आपने कुछ बेहतर चेंज लेकर आना है. ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप मतलब आई वुड से कि मोल्ड होना भी आपके लिए ज़रूरी है. अगर आप एक फर्म हो जाओगे ना कि नहीं यार मैं तो ठीक हूँ. मोल्ड होना, फ्लेक्सिबल होना, कॉम्प्रोमाइज़ करना 100% इम्पोर्टेंट. इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट योर स्पाउस टू मीट यू 100%. लाइक एंड यू डोंट नो एनीथिंग. हाँ, और आपको हाफ ही करना है हर चीज़. सो बस बात ये है कि जो मोल्ड वाली चीज़ थी वो तो ये थी ना कि यार इसलिए मोल्ड करना ताकि आप अपनी मर्जी से पूरा मोल्ड कर सको. पावर वाली चीज़, दिस इज़ डिफरेंट. कॉम्प्रोमाइज़ इज़ डिफरेंट. कोऑपरेशन इज़ डिफरेंट. बिकॉज उसका गोल ये होता है कि आप मिलके कॉम्प्रोमाइज़ करते हो टू मेक your life work, to build an empire, to work as a team. And basically it's like when you are posed with a problem as a couple, it's important to understand whose compromise is better for the whole team. And decide who needs to compromise at the moment, because this is better for all of us. And then, you know, like, because
the thing is कि when you are married and you have to build a life together, you can't be selfish. Because आपने चलाना है अपना एक घर चलाना है, you have to make your life work. You are married to this person, that person matters, you know, and you matter as well. So together you have to figure out कि it's not about him and it's not about you. You know, it's about us. Yeah. So what works best for us in a way that we are able to make decisions that everybody is happy with, because it is helping all of us. You know, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी खुश नहीं है, तो then that's Not gonna work. That's not gonna work. Yeah. And it's better कि आप बस फिर पीछे हो जाओ उस चीज़ से, बजाय इसके कि बस आप कांस्टेंट रिपेयर में लगे हुए हो और आप कोशिश कर रहे हो और वो फिर बस बुरी होती जाएगी. हाँ, बुरी होती जाएगी. Yeah, but yeah, it's hard because a lot of the times you know that this is the best decision for everyone, but it requires you to compromise, and that's a very tough. That is a very tough decision. Yeah. Tough thing to do. तो बस मुझे होता है कि यार any sacrifices or compromises that you have to make in your life, do them in a way that they don't make you unhappy. कि you know, like ठीक है, like this is they should not be sacrifices. They should be decisions you've made for a better life in the future, so that you don't have regrets about them, you know. But having that approach is so hard. It's so hard. Yeah. And at the same time, जिस तरीके से हम बात करें, like compromises are going to be there. Like we compromise for our friends as well. Yeah. So compromises are going to be there. But I think at the same time, जिस तरीके से आप बात करें ना कि अब हम we decide whose compromise is better for the team. So that means that एक चीज़ acknowledge हो रही है, that you know we are making the decision together. Yes, बात ये है Effective communication से. हाँ, मैं ये कही थी कि because like you mentioned that you know कि आप decide कर रहे हो कि whose compromise is better in this situation right now. So that means that you're acknowledging कि you know ये situation है, ये decision है, you are compromising right now. Because that's make it like you know वो हो रहा है कि अभी ये situation आई थी और इसने किया ये चीज़, rather than saying कि मैं compromise कर लेती हूँ, किसी को कुछ नहीं पता, मैं चुप करके वो कर. Yes, this. So मुझे होता है कि every decision is a couple's decision. It's not an assumed compromise. Yes. कि अच्छा इस पे तो बीवी नहीं compromise करना है. हाँ. कि you know ठीक है, जाहिर है ये वाली चीज़ें इस पे तो वही करेगी compromise, इस पे मैं तो नहीं कर सकता compromise. यार चाहे वो एक बहुत obvious चीज़ भी हो, it should be up for discussion. It should be put up there कि अच्छा यार ये चीज़ है. ये क्या decision है? Actually it's actually very smart to do that, because when you need the other person to compromise, if you sit and talk about it, help them reach that conclusion themselves. Yeah. Because you know that way when they actually compromise, they do it with the sense of logic and with that problem solving approach कि अच्छा यार ये तो this makes perfect sense that this needs to be done. अगर वो एक लड़ाई के साथ या एक ज़बरदस्ती के साथ किसी को compromise कराओगे ना, तो they will forever, even if they do it will forever hurt them, and they will always feel कि तुम्हारी वजह से उन्होंने किया. ये नहीं होगा कि यार हमने मिलके एक decision ली थी which was best for all of us. So sitting down together and helping that person understand why this compromise is important. And after that फिर वो भी ये होगा, because like we were talking about कि it's hard to make the compromise. But अगर आपने discuss कर लिया ना, उसके बाद ही अगर decision है, then you're not going to feel unhappy. हाँ, you feel content. जो ये वाली चीज़ है कि जब ना मुझे पता था कि अच्छा you know like future में I'm going to become a mother, but I'm such a career driven like sort of woman and I have achieved so much. मुझे बस एक चीज़ चाहिए थी कि I had never previously decided this कि अच्छा नहीं मैंने तो करियर को लेके साथ साथ चलना है. इनफैक्ट फॉर मी इट वाज लाइक कि अगर मेरा नहीं दिल किया ना बच्चे के बाद, तो मैं नहीं करूँगी. ठीक है, बट आई वांटेड टू हैव दैट फ्रीडम. ये वाली जो चीज़ है ना कि वो तो औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगी. ये वाली जो चीज़ है कि मुझे बस ये है कि एक औरत को हक होना चाहिए इस डिसीजन का कि वो काम करे या वो काम ना करे.
ताकि वो जब खुद ये चीज़ डिसाइड करी है ना तो वो सैक्रिफाइस नहीं कर रही, then she's making that decision based Herself. on whatever the circumstances are. Like I've seen a lot of women जो कहती हैं, जिन्होंने काम छोड़ा है और वो बेचारी शेम होती हैं इस बात पे कि ओ देखो she let her career go, she let herself go. But a lot of these women have made a very conscious decision for their family. That no, this is best for my family and I'm doing it. And I think that's जिसको मुझे बहुत बुरा लगता है कि a lot of times in our society उसको कहते हैं internalized misogyny, and I'm very against that because a lot of these women, they have that sense of self-awareness and they've made a very conscious decision that I want to be the one who gives my children a full-time attention. If my husband is handling the financials and I'm really not interested in pursuing a career anymore, don't make me feel shit about it. Let me make this and you can call it a compromise or a sacrifice, but this is, if she feels that this is best for her family and for herself and for their future, then it's her decision. Then it's her decision. But a lot of the people will put it like this ke Bichari. Bichari or compromise or is tarah se. So I've seen women who are so happy with that decision and they're doing that, but I've also seen women who are not happy with that decision and वो ज़बरदस्ती वाली चीज़ है because it was never discussed properly. उनको choice नहीं दी गई. उनको वो choice ही नहीं दी. तो वही बात है कि bring it onto the table and talk about it. Yeah. Everything should be on the table when it comes to this. And that's the thing. I think basic तो वही बात है, problem solving approach होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में. हर लिहाज से, हर relationship में, बेशक वो parents के साथ हो, आपके husband wife का हो, बच्चों के साथ हो. Which can be very hard because when your emotions and desires are involved, so sometimes they're completely the opposite of the solution. तो फिर आपको होता है कि यार okay, this is a solution but this is what I don't want. This is what I don't want. So I think it's I think the conclusion is same. It's hard but you make the effort every day. And honestly, like if it's not something you can do, then आपको अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता तो यार बस मतलब ज़िंदगी खूबसूरत है और उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहिए. बात ये ना कि a lot of these things जो मैं अपने यहाँ पॉडकास्ट में कहती हूँ कि I understand it's easier said than done. But it's important to at least know these things in your head. Acknowledge. कि we have to try. We have to try to. बस मुझे होता है कि you have to try to be happy. जिसके लिए होता है कि you have to really follow your intuition. ठीक है. And if you have made a decision, whatever decision you make, then फिर पूरे दिल से ना उसको निभाएं है और फिर उसको regret करने का कोई फ़ायदा नहीं. And if you really don't, बस मुझे होता है कि if you really feel bad about something, then don't do it. Ask yourself. So because at the end of the day, like living with that feeling of misery, it's not worth it. It's not worth it. तो वही बात है, वो जो pit of the stomach वाली बात है, वो जो shit feeling वाली वो बात है, पहचानना भी बड़ा मुश्किल है. So वही मैं कह रही हूँ कि जब तक that compromise doesn't erase that feeling, जब तक वो बात नहीं हुई जिसमें आपको compromise fully makes sense to you, there's no point of making that compromise because then you will feel shit about that compromise your entire life. And then बस मुझे होता है कि यार अगर आपने because it builds up a negativity in you ना, फिर वो left right हर वक्त बाहर निकलेगी your relationship. So and I also feel कि आप relationship इस तरह भी establish हो सकती है कि जब equal compromise हो रहा हो ना तो आपको इतना बुरा नहीं लगता कि अगर आज आपने किया है और कल उसने कर दिया तो then you don't feel bad. लेकिन जब constantly एक ही side से compromise हो रहा होता है, टेक हो रहा है और कुछ गिव नहीं है. give हो रहा है, get नहीं हो रहा. So that's and I have friends as well जिनका मैं देखती जा रही हूँ कि बस give ही है, and it just makes me really sad.
So that was a very interesting conversation. Yeah, it was. Thank you. मैं expect नहीं करती इस direction में. Usually यही होता है कि you come up with the topic, Yeah. उसमें से खुद ही कहीं से कहीं चला जाता है. चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं. And I think that's the best part because वो एक बड़ी natural फ्लो में Flow होती है, कॉन्वर्सेशन हाँ. होती है. हमने एक और टॉपिक भी डिस्कस करना था लेकिन हमें उसका टाइम ही नहीं मिला. या आई थिंक 1 घंटा हो गया है हमारी इस कॉन्वर्सेशन को. सो थैंक यू गाइज, बहुत इंसाइटफुल था. Yeah, मुझे बहुत मजा आया. Yeah. मुझे मजा आया. And thank you so much for tuning into this episode. If you have comments about this, then please leave them in the comment section. अगर आपको हमारी बात कोई सही नहीं लगी तो you are welcome to counter it as well. And if you have any other opinions to give, please do. We love a good discussion. That's why we do them. And we love a good debate as well. I think they're healthy for everyone. Because a lot of the times हमारी भी ऐसी बातें होती हैं कि that we miss them. I mean, we're not saying we are perfect in all of our conversations. So there's more perspective to it. Please leave them down in the comments below. And don't forget to like and don't forget to subscribe. And of course, if you found this helpful at all, then please share it with people who you think could take something useful from this conversation. And we'll see you again next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.